Hi everyone, good evening everyone. I hope I'm perfectly audible and visible to you. So yeah, this session is going to be extremely relevant and we can start with the session now. So in this particular session, basically we will be covering two important topics that are extremely relevant for examination. The first one is India's first hydrogen train, and the second one is the current understaffing crisis or the brain drain crisis faced by Indian Space Research Organization, right? So on that note, we can start with the first important topic of the day, which is the first hydrogen train of India. We have multiple batches specifically designed for the GK and current affairs section, and also two batches. One is for the aspirants of CLAT and ALE 2027, whereas the other batch is for the aspirants of CLAT and ALE 2028, which is known as Praram. We launched this batch on 10th of July 2026, right? Now moving on to the next point. So these are two student support contact numbers. You can contact on these details, and one of the counselors will definitely provide you assistance regarding your every problem, right? So now we can start with this today's lecture, and this is going to be the first topic. Hydrogen train rolls out today, leak detectors, auto shutdown, real time monitoring on track, right? So let's talk about this historic milestone of our country now. When we talk about anything related to fuel, तो आजकल हमारे माइंड में पहला दिमाग नितिन गडकरी का आता है, ऑल्दो पेट्रोलियम मिनिस्टर इज मिस्टर हरदीप सिंह पुरी. सो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, वो E20 वगैरह वाला जो इशू है, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन विच इज नोन एज नमो ग्रीन रेल. प्लीज नाम याद रखिएगा इस ट्रेन का, नमो Green Rail. It was inaugurated on 17th of July 2026. Right now, dignitary flagged off by Prime Minister Narendra Modi. अब नमो ग्रीन रेल है, तो इसको फिर इसका इनॉग्रेशन किसने किया? इसका इनॉग्रेशन was done by नरेंद्र मोदी. Right now, moving on to the next point. Now the evolutionary journey, a shift from coal, steam, diesel, rapid electrification of broad gauge routes, now electrified, decentralized, clean energy generating electricity on board, right? So Indian railways have witnessed a lot of important changes in last 150 years. हमने steam engine से start किया था, steam से coal powered engine, कोल पावर्ड इंजन से डीजल एंड पेट्रोलियम पावर्ड इंजन, डीजल एंड पेट्रोलियम पावर्ड इंजन से हम इलेक्ट्रिक रेलवेज पे आए, इलेक्ट्रिक ट्रेन पे आए, और फाइनली वी हैड अ ट्रेन जो ट्रेन के अंदर ही एनर्जी प्रोड्यूस करके ऑपरेट होगी. सो दैट इज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन नोन एज नमो ट्रेन. नाउ ग्लोबल स्टैंडिंग, इंडिया जॉइंस एन एलीट ग्लोबल क्लब, जर्मनी, फ्रांस, इटली, चाइना, जापान एंड United States of America. So India is going to be the 7th country to have hydrogen train. हमसे पहले ये जर्मनी, फ्रांस, इटली, चाइना, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये हिस्टोरिक माइलस्टोन ऑलरेडी अचीव कर रखा है, एंड दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट विल हेल्प इंडिया इन अचीविंग इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म क्लाइमेट एमिशन टारगेट एंड दैट इज टू बिकम अ नेट zero CO2 country by 2070, right? So this is a very futuristic target that we have set for ourselves. And what is this futuristic target? कि हम net carbon zero country बनना चाहते हैं 2070 तक, and this particular milestone will help India in achieving the target, right? तो ट्रेन का नाम क्या है? नमो रेल, नमो ग्रीन रेल. 17th जुलाई 2026 को प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है. अब व्हाट इज द लेटेस्ट लेवल? अब इसमें अलग अलग चीजें क्या है कि जो अलग अलग पावर हाउस सिस्टम है वो किसने डिजाइन किया. सो द पावर, दिस पर्टिकुलर ट्रेन इज पावर्ड बाय अ 3200 हॉर्स पावर propulsion system, the electrochemical formula. अब electrochemical formula is not that much relevant for your examination, but there are certain aspects, definitely certain aspects of this particular chemical formula which are basically, which everyone should know because these are relevant for your common understanding. Hydrogen plus oxygen will electricity plus water vapor, so zero emission at point of use. अब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को बंद करके बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी. उस इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर्स निकलेंगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ
वाटर वेपर जनरेट होंगे, सो देयर विल बी नो कार्बन एमिशन। और ये सारा सिस्टम ऑन ट्रेन या आप कह लीजिए ऑन बोर्ड ही होगा। So that way this is going to be one of the most advanced or the futuristic development in Indian railways. Now students, moving on to the next point. The catalyst is uses a proton exchange membrane fuel cell. Now this is actually very relevant. They might ask this particular question for in the examination, that what kind of fuel cells are used by India's first green hydrogen train, Namo Green Rail. So your answer would be proton exchange membrane fuel cell. Proton exchange membrane fuel cells are used by Namo Rail, Namo Green Rail. And अब एनर्जी डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट, अब दीज आर द नंबर्स, आपको याद नहीं रखने की जरूरत है बेसिकली। सो हाइड्रोजन 120 मेगा जूल्स पर किलोग्राम एंड डीजल का एनर्जी डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट कितना होता है 43 मेगा जूल्स पर किलोग्राम, राइट। सो दीज आर टू थिंग्स विच यू डोंट हैव टू रिमेंबर। हाइड्रोजन इज 120 मेगा जूल पर किलोग्राम एंड डीजल इज 43 मेगा जूल पर किलोग्राम। ये एनर्जी डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि दिस इज द हाइड्रोजन ट्रेन और जो नॉर्मल डीजल पावर ट्रेन होती है उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट किया गया, एनर्जी कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट किया गया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, train anatomy and route analytics. Now this particular segment is very important because consortium of NLUs is quite famous for asking these type of questions. So let's start with this particular discussion now. So the first thing first, a 10 coach configuration consisting of 2 hydrogen driving power cars, one at each end producing 1200 kilowatt each and 8 trailer coaches. So basically अब आपको क्या क्या चीजें इसमें याद रखनी है कि टोटल 10 कोच होंगे, 10 डिब्बे होंगे, इसमें से 2 इंजन होंगे, 2 हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार्स, इंजन होंगे बेसिक हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार्स, 1 एट ईच एंड। मतलब बेसिकली अभी दिस इज तो क्वाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। सो बेसिकली ये और ये है वो क्या है, ये बेसिकली ड्राइविंग पावर कार्स हैं और 8 कोचेस फॉर द पैसेंजर्स, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाइल ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेन्स आर स्मॉल 2 to 4 coaches, India has built a 10 coach train set. Now again, because we have to build a 10 set train coach because we have a population of 1.45 billion. So building a train set of 2 to 4 coaches will not serve the purpose, right? So and this particular 10 train coaches can hold a total strength of 2600 passengers, right? Now operational speed would be 75 km per hour, maximum speed would be 110 km per hour. तो क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, 10 total coaches, 2 driver cars, 1 at each end, total passenger strength is 2600 passengers, total जो maximum operational speed होगी that is 75 km per hour, और जो मैक्सिमम स्पीड इस ट्रेन की होगी वो कितनी होगी 110 km per hour, बट ये रन करेगी 75 km per hour की स्पीड पे। अब इनिशियली जो लॉन्च होगी ये 89 किलोमीटर का रूट कवर करेगी, कहां से कहां तक, जिंद-सोनीपत सेक्शन ऑफ नॉर्दर्न रेलवे। अब 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर पॉइंट में स्टूडेंट्स जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट, टोटल 89 किलोमीटर के रूट पे ये ऑपरेट करेगी। सेकेंड, ये जिंद से सोनीपत के बीच में ऑपरेट करेगी। थर्ड, जिंद सोनीपत फॉल्स अंडर द नॉर्दर्न रेलवेज, राइट। तो ये भी इंफॉर्मेशन आप लोग को याद रखनी है। और इसके बीच में जिंद और सोनीपत के बीच में टोटल 12 इंटरमीडिएट स्टेशन होंगे जिनके थ्रू ये ट्रेन पास होगी, राइट। सो दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, moving on to the next point which might be relevant for your examination. So now we know multiple aspects of this particular train, कितने ट्रेन, कितने डब्बे, कितने पैसेंजर्स, कितनी मैक्सिमम स्पीड, ट्रेन का रूट क्या है, टोटल पैसेंजर्स कितने, all those information we are
all this information we are very much sure about everything. Now we can move to the next aspect of our discussion, and now in the next segment we'll be discussing about the hydrogen supply chain infrastructure. Now the train cannot run without fuel, so basically the hub, India's largest integrated railway hydrogen storage and refueling facility, established at Jind, Haryana. So to basically serve the main requirements or main, so we have discussed this particular aspect. Now moving on to the hydrogen supply chain infrastructure. India's largest integrated railway hydrogen storage facility has been established at Jind, Haryana. Storage capacity 3000 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन. इंडिया इज द 7th नेशन टू हैव दिस पर्टिकुलर ट्रेन. 89 किलोमीटर का रूट है जिंद से लेकर के हरियाणा, जिंद से लेकर के सोनीपत के बीच में, जिस पर यह ट्रेन ऑपरेट करेगी. टोटल 10 कोचेज हैं, 2 ड्राइवर्स कार हैं एट ईच एंड. देयर आर 8 कोचेज जिसमें 2600 पैसेंजर्स को हम फिट इन कर सकते हैं. मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर, ऑपरेशनल स्पीड इज 75 किलोमीटर पर आवर. जिन सोनीपत नॉर्दर्न रेलवेज में फॉल करता है, ये भी आप लोग प्लीज याद रखिएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. So the 3-stage refueling pipeline: production, compression and dispensation. Now this is a very technical information. You don't have to exactly remember the technical information of this particular topic, but again this is relevant for your examination. Water is split via on-site electrolysis using green electricity. Hydrogen gas is compressed to 500 bar to maximize storage density, then refueled via 2 independent dispensers at a regulated 350 bar pressure to fill both power cars simultaneously. तो किस तरीके से इस पूरे रिफ्यूलिंग पाइपलाइन को ऑपरेट करेंगे, और जो 2 ड्राइविंग कार्स हैं, जो दोनों एंड पे एक एक ड्राइविंग कार ऑपरेट की जा रही है, उसको किस तरीके से रिफ्यूल करेंगे. दिस इज द एंटायर प्रोसेस. पहले वाटर को स्प्लिट करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, फिर उसको हम हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस करेंगे, फिर उस कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस को हम रिफ्यूल करेंगे दोनों ही डीजल कार्स में. सो दिस इज अगेन द रिफ्यूलिंग प्रोसेस. अगेन इट्स नॉट दैट रिलेवेंट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, the defense in-depth safety architecture. Now adheres to the international defense in-depth standard using multiple independent safety layers, instantly dilute, detect और isolate leaks. तो अगर आप इस particular topic का heading देखें, so hydrogen train rolls out today, leak detectors, auto shutdown, real time monitoring on track. So basically the Indian Railways has made full preparation that if there is any sort of leak, then the Indian Railways is fully prepared to identify or to track that particular leak and solve that particular problem immediately. The detection matrix: continuous automated monitoring via leak, heat, flame and smoke detectors installed across both the train and the Jind plant. So basically Jind, जहां से ये particular जो फ्यूल होगा, जो हाइड्रोजन होगा, उसको जहां से हम प्रोड्यूस करेंगे, वहां से लेकर के ट्रेन में जो 10 कोचेज हैं, हर जगह हर एक तरीके का हीट, फ्लेम और स्मोक डिटेक्टर्स को लगाया गया. इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी और इमरजेंसी, द गवर्नमेंट हैज all the preparation. Now the next point is now indigenous developers. अब किसने डेवलप किया इस ट्रेन को? Now this is going to be the important information. So it has been designed by Research Design and Standard Organization, Messrs Medha Servo Drivers. Integral coach factory designed the theme and exterior layout. So exterior designing किसके द्वारा की गई? So exterior designing was done by Integral Coach Factory. Messrs Medha Servo Drivers handled the core technological integration, and Research Design and Standard Organization have formulated all the technical aspect of this particular train. Now moving on to the next point. Now okay.
Now, this is something which is extremely relevant, and it is related to the recent problem faced by Indian Space Research Organization. तो अभी हो क्या रहा है students? As we know, the private space industry is growing in India. We have multiple companies which are becoming quite big, and one of the primary examples is Skyroot Aerospace. Right, so basically Skyroot Aerospace has recently become an unicorn, and it is also launching India's first satellite launch vehicle tomorrow, right? So there are a lot of private players that are growing in the market, and recently SpaceX launched one of the biggest IPOs in the history, right? So private space industry is growing very rapidly. Now, Indian Space Research Organization, which is the nodal space agency of our country, is facing a very huge problem at this point of time. अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे important officials और बहुत सारे important officers and scientists are leaving Indian Space Research Organization because of the growing opportunities in the private segment, right? Now, let's break down this entire topic. So when we talk about Indian Space Research Organization, students, the organization itself is very important. The background of organization is always relevant for every examination. If we are discussing anything related to Indian Space Research Organization, then we need to have a discussion about the background of ISRO as well. Now, evolution of ISRO is it's a very lengthy topic. So we won't be covering all the aspects related to the evolution of the Indian Space Research Organization, but certainly there are certain points which are actually academically very relevant for our discussion as well. So what is the core issue? Why we are discussing this particular topic? Because a lot of scientists are leaving Indian Space Research Organization, and it is creating a problem for them as well. Against the sanction strength of approximately 14,000, with how many scientists currently this particular organization is working? And the main problem is because the amount of remuneration that these scientists are getting in the private industry or the private sector is huge, it's enormous. So it becomes very difficult for a person to still keep on working for the government where they have a lot of money in the private sector, right? So this is something which is creating this particular problem. So let's start with our discussion now. Indian Space Research Organization. Now, when we talk about Indian Space Research Organization, first we have to discuss about INCOSPER. Now, what is the INCOSPER? So, INCOSPER is the predecessor of Indian Space Research Organization. And what is INCOSPER? The Indian National Committee for Space Research. It was established under the Department of Atomic Energy on the recommendations of Dr. Vikram Sarabhai, right? So, INCOSPER was working under the Department of Atomic Energy, and it was basically created on the recommendations of Dr. Vikram Sarabhai, right? Built the Thumba Equatorial Rocket Launching Station in Tamil Nadu. So this is the initial, achievement or milestone of INCOSPER, that it developed an equatorial rocket launching station at Tamil Nadu or in Tamil Nadu. And what happened on November 21st, 1963, that INCOSPER launched its first ever sounding rocket known as Nike Apache. 21 नवंबर 1963 को INCOSPER ने रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम था नाइकी अपाचे, एंड इट वाज प्रोक्योर्ड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट? सो दिस इज आल्सो रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. Now, the next important development when we talk about the timeline of evolution of Indian Space Research Organization, students, is August 15, 1969, the birth of Indian Space Research Organization. So, actual formalization of institution took place in 1972, but the entire idea of ISRO came into existence in 1969. So, what happened on 15th of August 1969 is equally relevant. INCOSPER was remodeled into the Indian Space Research Organization with headquarters in Bangalore, given a wider mandate to harness space technology for national development. So, rebranding
or renaming took place in 1969, where the government decided that finally INCOSPER would be termed as Indian Space Research Organization and it would be headquartered in Bangalore. So students, another relevant information with the reference to ISRO is that its headquarters is in Bangalore and it is known as Antariksh Bhavan. Right? Ab chairperson kaun hai? That is Dr. V. Narayanan. We'll discuss it in the later part of our discussion. But remember that ISRO is headquartered in Bangalore. It is basically headquartered at Antariksh Bhavan, which is in Bangalore, and it is headed by currently V. Narayanan. Right? Now, moving on to the next important development. So, 1961, 1963, 1969, actual formalization happened in 1972. Now, what happened in June 1972? The government of India established the Space Commission and the Department of Space. So, it happened in June 1972 that the government of India established Space Commission and the Department of Space. And finally, in September 1972, ISRO was officially brought under the administrative umbrella of the Department of Space, creating the highly centralized policy framework used today. So, from 1961 with the incorporation of INCOSPER to 1972 institutionalization of ISRO, a lot of development has taken place simultaneously, right? But at the same time, with the passage of time and earlier, working for ISRO was a sign of pride for many Indians, that yes, I work for my country, I work for the future of our country. But with the progress or with the kind of progress that this entire industry is making, the remuneration or the salaries are pretty high, that these scientists are earning in millions of dollars. So it becomes quite difficult for these scientists to underestimate that or to ignore that sort of money, right? Now, there are various specialized institutions under Indian Space Research Organization, which is working in various domains. The first one is VSSC, Vikram Sarabhai Space Center. It is in Thiruvananthapuram. It is basically the design and development of launch vehicles, satellite launch, small satellite launch vehicle, or geosynchronous satellite launch vehicle, polar satellite launch vehicle Mark 3. ये सारे launch vehicles कहाँ पे डिजाइन होते हैं? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, which is in Thiruvananthapuram. Then we have UR Rao Satellite Center. It is in Bangalore. और यहाँ पर क्या होता है? Satellite design, satellite का assembly और satellite का integration होता है UR Rao Satellite Center Bangalore में. Then we have Satish Dhawan Space Center SDSC Sriharikota. Now this is the exact name जो हम सब लोगों ने सबसे ज्यादा बार सुना है, because it is a launch pad, the primary satellite integration and launch pad hub, Satish Dhawan Space Center. Liquid Propulsion System Center, it develops liquid and cryogenic propulsion stages. Space Application Center Ahmedabad, it develops advanced sensors for remote sensing and communications, right? So Indian Space Research Organization has dedicated specialized agency. कुछ सैटेलाइट बनाते हैं, कुछ सैटेलाइट को असेंबल करते हैं, कुछ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बनाते हैं, बट एवरी डेडिकेटेड विंग हैज अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन टू परफॉर्म, राइट? So this is the institutionalized framework of Indian Space Research Organization. Then the active space fleet, polar satellite launch vehicle, small satellite launch vehicle, GSLV launch vehicle Mark 3, ये सारे अभी हमारे पास में क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं जो अभी इसरो के पास में एक्टिवली काम कर रहे हैं. Then the crown jewel of success. Now, one of the historic milestone achieved by the Indian Space Research Organization was launch of Chandrayaan 3. So on August 23rd, कब लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को? Anyone? कब सक्सेसफुली लैंड हुआ? So on 23rd August 2000. My question is very simple. On what date Chandrayaan 3 was launched? Right. So now we know this. I guess I was waiting.
So August 23rd, 2023, when Chandrayaan 3 successfully landed on the southern pole of the moon, India became the first country to complete soft landing on the southern pole of moon. और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? शिव शक्ति पॉइंट. And to commemorate this particular achievement of Indian Space Research Organization, the government declared that it will celebrate 23rd August as National Space Day. So in 2024, we celebrated the inaugural edition of National Space Day, right? So Indian Space Research Organization has, so many achievements. Or one of the major, contribution of ISRO इसकी क्यों फेमस है इतना? चीप सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में इसरो सबसे ज्यादा फेमस है. हम सबसे सस्ते में सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं. नाउ इन 2025 डॉक्टर वी नारायणन बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ इसरो. और लास्ट ईयर हमने 100th सैटेलाइट लॉन्च किया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से. इट वाज NVS-02. NVS-02 was successfully launched from Satish Dhawan Space Center Sriharikota and it was 100th satellite launch, right? तो काफी सारे अचीवमेंट हैं इसरो के. बट करंट प्रॉब्लम ये है कि मास रेजिग्नेशन हो रहा है. 122 experienced Group A scientists and technical person have resigned or requested for a voluntary retirement within a very short span of time. 100 से 120 टॉप लेवल साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस ग्रेड ए साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस या तो वो बेसिकली डिमांड कर रहे हैं कि उनको वॉलंटरी रिजाइन करने की मतलब या वो रिजाइन करें या उन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जाए. अब मेनली दो सेंटर ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड यूएसआरसी बैंगलोर. यूएसआरसी बैंगलोर हैज लॉस्ट ओवर 80 साइंटिस्ट एंड विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हैज लॉस्ट ओवर 20 साइंटिस्ट, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. कौन कौन से जो हाई ऑफिशियल्स हैं? विक्टर जोसेफ जो LVM-3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे. देन आदित्य रालापल्ली चंद्रयान 3 का स्टिमुलेशन वाला जो पूरा था सिमुलेशन था उसको पूरा ये लीड कर रहे थे. स्पेस और करंटली स्पेडेक्स प्रोजेक्ट जो था उसके डायरेक्टर थे. और इन सब लोगों ने अभी क्या किया? रिजाइन कर दिया. अब इस पे गवर्नमेंट का क्या कहना? सो द प्री एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, सो बेसिकली अभी 14,108 का सैंक्शन स्ट्रेंथ है जिसके अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 1600-1700 scientists were shot, right? The policy response and emergency exit freeze to protect strategically sensitive programs like Gaganyaan. The Department of Space intervened with aggressive administrative restrictions issued by S. Rajashekhar, Joint Secretary Personnel, Department of Space, to completely freeze routine departures of personnel attached to prestigious missions. So basically Department of Space ने भी बोल दिया कि जो लोग prestigious प्रोजेक्ट से रिलेटेड जुड़े हुए हैं उनको हम अभी अलाउ नहीं करेंगे प्रोजेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट को लीव करने के लिए. They have to complete their project, then they can leave. The old rule was allow individual ISRO center directors to easily approve resignation and voluntary retirement request locally. So पहले क्या था कि ये जो अलग अलग सेंटर्स इनके बारे में हमने डिस्कस किया तो वो जो सेंटर्स के डायरेक्टर होते थे वो लोकली क्या करते थे? किसी भी रेजिग्नेशन या वॉलंटरी रिटायरमेंट को अप्रूव कर सकते थे. बट reverses local approval, center directors are ordered not to accept requests from scientists working on critical missions until project completion. All applications up to the scientists, engineers, SG level must now be directly sent to Department of Space for a final centralized decision. तो अब पहले बेसिकली क्या था कि आप लोकल लेवल पे डिसाइड कर सकते थे कि कौन रिजाइन करेगा, कौन वॉलंटरी रिजाइन नहीं करेगा. बट इतना मास रेजिग्नेशन हो गया दैट फाइनली द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि जो लोग भी क्रिटिकल मिशन पर काम कर रहे हैं उनका रेजिग्नेशन अप्रूव करने की जो पावर होगी वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास में होगी, लोकल सेंटर्स के पास में वो पावर नहीं होगी, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. So yeah, this is all about today's session, right? So this is again two very important topics, ISRO and this Namo Green Rail, right? So this is all about today's session, guys. Thank you so much for watching this. We'll see you tomorrow at the same time. And yeah, thank you so much. If you have any particular doubt or question, you may ask your question in the comment section. And this is it. Thank you so much. Bye.